And a professional grooming is also very, very important. Have a single page CV if possible, and know each and every word what you are writing. So like whenever we make the CV, we should mention about their achievements, okay, and hobbies. Try to mention three or four like your hobbies. Now, if you fill in with so much information, I'm sure he doesn't have time to go through that. Yeah. I think a good professional CV, very important. Plus, be honest, okay, because they'll ask you like lots of questions about your achievements या फिर आपने किस चीज़ में participate किया वो पूछेंगे like. An impact that you're really passionate. What do you guys think? What should be the professional dress up for an airline interview? Professional suits mean with a proper tie, with a tie pin, should be there. If possible, maybe cufflinks. Like we can purchase navy blue color coat pant or black, okay, and proper iron shirt. If none of them is available, at least try to give a mock interviews to yourself only, maybe in front of a mirror. So what can we do? We should give the maximum interview to our like elder brother, elder जो भी family में या फिर your parents या फिर friends, colleagues. So technical knowledge उन्हें उतना नहीं चाहिए because they know कि they'll train you over the period of time. The main question they ask, why do you want to join our company? आप preparation का मतलब है आप एक approach ढूंढ रहे हो. You should know the basics of your subjects. So I think जो बच्चों का approach होना चाहिए, that should be more a logical. Hello guys, I'm Captain Tomar Avdesh, and today I have my colleagues Captain Deval Soni and Mr. Prem Misra, and he's heading cadet training in Golden Applets. So basically this is more like we want to discuss about how to prepare for a pilot interview, because if you see these days a lot of people is going for cadet interview. There is one opening which has just come for Indigo, so people will be going for Indigo type rated and non-type rated interview. So we will just take view of our expert and our colleagues what they think how to clear the interview, because they have done it before. So let's start a discussion. It's more like a informal discussion about and how to prepare for it. So I would start with Captain Deval. I think a good professional CV, very important, and keep your documents handy, or your CPL, your FRTL, your RTR, whatever, or your medicals. And a professional grooming is also very, very important. Okay. So they will, let's say CV. If you take CV, I have seen many CVs. Like people come with fancy CVs with so much detail into it. If you ask them, what does that mean? They'll just say, it looks good, it looks cool. But they don't know the repercussion of that. So whenever I meet anybody, I just suggest them, have a single page CV if possible, and know each and every word what you are writing. You should have something to back up whatever you are writing. You are saying my strength is, my weakness is, let's say, being friendly. Now you have to support that. When it comes to how do you support that weakness, probably a lot of people get stuck there. So the most important thing, you have to avoid typo. In CVs, if there are typos, it's catastrophic. Yeah. You have to avoid that. Try and keeping it one page. That is more because so that CV. What do you want to do with that? You want a interviewer to scan your CV. Now, if you fill in with so much information, I'm sure he doesn't have time to go through that. Yeah. So try keeping in one word if possible, one page if possible. Avoid any kind of typos in the CV. Apart from that, know it clearly. Whatever you are writing, you must know it. Yeah, and I think everyone should paste their photographs, which not all of them, put their Correct. Yeah, photographs. that's very important. And if possible, get a color printout of your CV. Exactly. Keep it in a very nice folder. It gives you a good impression. I have seen people hustling, bustling in the morning. Yeah. Oh, I didn't get a CV. Yeah. Now that itself
says some lot. Yeah. So that CV probably not many people take it seriously, Yeah. but you must take it seriously because that is very important. So that from I think CV And part. the CV and one more thing I'd like to add to it, the CV should have uh, an impact that you're really passionate, about aviation. I've seen a lot of people, they just mentioned some few lines only about their passion in aviation. I think your aviation interest should be highlighted, and it should be in a such a way that the interviewer should look at your CV and they should feel like, yeah, this person is really passionate. You've done Exactly. a lot of things Yes. in By aviation. CV, you are trying to sell yourself, that how you fit into this job. Yeah. So you have to showcase that in whatever way possible. Yeah. And one of it is definitely CV. And- And even I would say, if you are not that good in making CVs or all, you can definitely take a professional help. Correct. You may have to pay something, but you don't hesitate to pay that, because we don't understand the value, but it creates a lot of value if it is professionally Yeah. made. And even Avdesh, there is a new way of giving an interview actually. Yeah. I mean, people have adopted this new way. They have started giving their story in the interview. Yeah. So I mean, that's a very nice way of giving an interview, and your chances of getting selected becomes very high. If you really know how to tell your story in an interview, trust me, you've cracked the 80% of your The interview. point is, that story should be yours. Yeah, You should absolutely, make your yours own only. stories. I mean, yours only, and Yeah. I know there are on YouTube, and there are various courses in which you can learn how to tell your story. Yeah, because everybody has a At journey. your selection, yeah. When you come to this stage, you go through a journey. Because I mean, with the interview, when they look at the CV, everybody have those same pet lines. I want to become pilot. When I saw the aeroplanes, those engines, those noise. When I was in school, I really got a goosebumps. Uniform, all those True. things. But if someone really knows how to narrate your story well, to show your passion, I think you're almost done. So yeah, I think we have covered how your CV should look like. Okay, so Prem, what do you think? How should a CV look like? So like whenever we make the CV, we should mention about their achievements, okay, and hobbies. Try to mention 3 or 4 like your hobbies, plus your languages, plus your work experience. If you have worked with the company, you please mention your work experience and उसमें कितना experience है आपके पास, कैसे क्या है. Next thing, like according to me, like please mention your 10th, 12th, if you have completed your graduations, 12th, your like score and how much you score in that. And इसके अलावा I think that will be enough for them. Plus, be honest, okay? Because they'll ask you like lots of questions about your achievements या फिर आपने किस चीज़ में participate किया वो पूछेंगे like have you shown leadership, team play skills during your achievements, अगर आपने कोई award मिला कुछ भी मिला है, so be honest in your interview. Next thing, अगर जो मुझे लगता है आपका, like whenever going for the interview also, like whenever going for the interview, please like do 2 printouts of your CV and purchase 1 file for interviews. उसमें सारे document you can carry, your class 1 medical, your CV, another document your passport जो कि required हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे. So according to me, this will be enough for the CV. Yes sir. Okay. Yes sir. Thank you. And so this is the one part, CV, how do you prepare? Yes sir. The next part, what I believe, when you go for an airline interview, your interview start at home. When you think of that, today I'm going for something which I always dream for, and you obviously want to perform, so you would be definitely nervous. So personally, I don't feel nervousness is bad, but it must not overpower. So nervousness is okay, but then the second thing is, how do you dress? After that, it comes, you go to many people, कि वो आज मैं क्या पहनूं, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है. Some will suggest ये you can wear this, that. What do you guys think? What should be the professional dress up for an airline interview? I think professional suits for men's and for women's as well. And professional suits mean with a proper tie, with a tie pin, should be there. If possible, maybe cufflinks, Proper iron. Yeah, and with nice black shoes.
you know, that should be there. I think. Okay. So yeah, that's how it should be. What do you think? But should be close it buttons or let it open? I think we should be closed. As per me, I mean, Is there any logic for it? I think open blazers may not be very suitable for in interviews. Maybe. So what logical explanation would I feel is when you are dressed, if your shirt is in and your blazer is completely visible, distraction is less. When you have a shirt out, blazer is of different color. When I see, I get two different. I will focus on shirt, then I'll focus on blazer. I'll focus on shirt. Focus on blazer. So logically, it is correct कि आप close कर लें, but some people even doesn't like that. It's okay, but if it is feasible, one should. What other thing about suit? If you say suit, people can find fancy suit wherever they get in the market. There are various kind of suits. So personally, if I would there, I would like black without design, black or blue, whatever, without design. There are these days, even in black, you will find this place shiny in some of the suit. So, if possible, people should avoid it. Yeah. What do you think, Prem? So according to me, like as you mentioned that navy blue color is good. Navy blue. According to me, like we can purchase navy blue color coat pant or black, okay, and proper iron shirt, and we should purchase two shirts. One shirt for our group discussion, and one shirt for our personal interview. Because if you're going for the Indigo, like suppose your GD is today, okay, so they can call you for your interview day, like tomorrow. So please keep two shirts ready for the GD and interview. According to me. Okay. So, Captain Devil and Prem, tell me, if I'm going today for an airline interview for either as a cadet or maybe type rated CPL holder or a non-type rated CPL holder, what are the tips basically? How do I can pass that exam somehow? What do you think you can give us some benefit which I can make large in the interview? I think a good preparation, which if you're really prepared well, then you're really confident. And how you can be nicely prepared by doing a lot of practice. Maybe your friend or maybe your senior or maybe an expert or with a mentor, try to do a lot of mock-ups, and if you're alone, just try to do in front of a mirror. So, try to answer so many HR questions specifically, which is more important. What do you mean by HR question? You mean behavioral question, right? Behavioral questions, yeah. Okay. Yeah, like most important, like which is the first question, mostly, like tell me about yourself. So, which sets the tone of the interview. So, what do you, say? So according to me, like whenever you're going for the interview, like be on time for the interview, okay, and keep ready all documents. Plus, me try करो आप 1 hour like with this click call half an hour reporting time पहले होता है interview start होने से पहले 1 hour before you should reach there only, okay. Next thing, like syllabus में they'll ask you lots of types of questions coming to the HR questions as sir mentioned. So in HR they'll ask you about yourself, like why do you want to become a pilot, and if you don't get selected what will you do. So there are lots of questions are there, and they want answer point to point. So, Devil and Prem, see, basically, now everybody knows. If you ask somebody, if I'm a candidate, if I go to 10 people, they'll say, prepare well, prepare well. What does that mean? You have to be specific. Ki, what are the things? See, I'm anyway studying. If I'm going for interview, I will obviously study. But there are few things. What is important? How do you study? How do you structure it? So I want to know more about that from all of you. Ki, if you were getting trained for an interview or preparing for an interview, how would you prepare? I think
एक तो काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, मे बी आपके फ्रेंड्स को या मे बी आपके सीनियर्स को जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटर्स हैं. If none of them is available, at least try to give a mock interviews to yourself only, maybe in front of a mirror. और आई थिंक HR की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, यू नो. सो आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. HR क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सिलेक्शन के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सकता है और कम कर सकता है. टेक्निकल नॉलेज फिर भी इतना ठीक है, ज़रूरी है, आई नो, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट HR के आंसर्स हैं. व्हाट डू यू, आई मीन, व्हाट्स योर टेक? So like according to me, like they basically ask HR questions in the interview. So what can we do? We should give the maximum interview to our like elder brother, elder जो भी family में या फिर your parents या फिर friends, colleagues. And next things like try to find out the recent interview airline interview questions which they are asking. Like suppose if you're going for the Indigo, so last attempt में क्या question पूछा था? Try to find out the questions and like difficulty level plus ये सब चीजें पता होनी चाहिए. Plus you should know about the like technical questions, like they can ask you any question, like suppose for example they'll ask you about the jet engines, working of jet engines, types of jet engines, plus like piston engines जो भी आपने पढ़ा है. You guys have already clear your like technical journal exams, your specific exams, so they'll ask you. And plus your aircraft जो आपने fly किया during your training, like suppose if you fly like आपने fly किया Cessna 172 or 152, so you should know the basic of that airplane. Plus they'll ask you the current affairs of that company, like current how many aircraft they order, recent their current affairs, recent destinations, plus their profit, and वो सब चीजें current affairs पता होना चाहिए. And the main question they ask, why do you want to join our company instead of another company? Like suppose you are going for the Indigo, there are like lots of airlines are available, like Air India, Akasa Airlines are there, Spice. So they'll ask you, why do you want to join our airline? Why not another airlines? So आपको आंसर देना होगा. बाकी आप सर बताइए क्या हो सकता है इसके अलावा. या जो मुझे लगता है, एज यू ऑल ऑफ यू सेड कि HR और बिहेवियरल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज सी आप जब कैडेट पायलट प्रोग्राम में जा रहे हो, वो आपको हायर कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, सो टेक्निकल नॉलेज उन्हें उतना नहीं चाहिए, बिकॉज दे नो कि दे विल ट्रेन यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो जितना वो आपको ट्रेन करेंगे टेक्निकल नॉलेज विल कम, वो आ जाएगा. जो देखना चाहते हैं वो आपका एटीट्यूड बाय दोज बिहेवियरल क्वेश्चन, और यू कॉल इट HR questions. I have addressed them at length in my book, which you will find it very soon. But मुझे जो लगता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर किसी से एडवाइस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ओवरबर्डन देम. HR उनको बोलोगे बिहेवियरल क्वेश्चन करो, 200 क्वेश्चन दे देंगे. ऑलमोस्ट अप्रोच सबकी सेम है, दे आर ऑल मोर और लेस सेम. बट देन दे बच्चे जाएंगे और हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर ढूंढने को घूमेंगे. उसमें इतना ओवरबर्डन हो जाता है कि सी HR क्वेश्चन और बिहेवियरल क्वेश्चन वो रट नहीं सकते. आपको रटना नहीं है. आप प्रिपरेशन का मतलब है आप एक अप्रोच ढूंढ रहे हो कि इफ़ मुझे ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर 5 years आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कंपनी में. तो मुझे सिर्फ ये जानना है एज ए स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन से मेरा इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है. इफ़ आई नो दैट आई कैन आंसर इट माई सेल्फ. सो आई थिंक जो बच्चों का अप्रोच होना चाहिए दैट शुड बी मोर अ लॉजिकल रादर देन जो कि इसने ये बता दिया इसका ये आंसर अच्छा होता है. अब सी अगर आपने देखा होगा देविल, एनीबडी किसी भी पायलट से पूछोगे या एस्पायरिंग पायलट से पूछोगे, तुम इतना ये सवाल पूछ लेना, आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. बिकॉज एक्सट्रोवर्ट लुक्स गुड, 90% विल से आई एम एक्सट्रोवर्ट. एंड वो ये भी बोलेंगे कि पायलट्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू. सो द मेन फोकस शुड बी ऑन अ मीनिंगफुल थिंग्स rather than gathering information from
X, Y, Z places. That's what my point of view. And all of you, what you said, कि HR part or behavioral part, yes, it does play a great maximum role actually वही होता है आपका, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज पे आपको फेल पास तो नहीं कर रहे हैं ना वो. ये हो सकता है कि आपका मोटिवेशन लेवल देखने के लिए वो इस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दैट जस्ट टू गेज हाउ मोटिवेटेड यू आर, नॉट टू फेल और पास. Yes. So that's what, like, you should know the basics of your subjects. Let's say कि अगर आप 320 rated है, so आपसे you should know the basics of all your systems and performance, your memory items, limitations, वो आपको पता होना चाहिए. लेकिन in depth questions के ऊपर आपको कोई fail नहीं करता. करेक्ट. कि आपसे कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, if you're not been able to answer, they will not, the outcome will not be based on that. करेक्ट. But if you really don't know the basics, let's say कि आप CPL होल्डर हो और आपको ये नहीं पता है कि लिफ्ट क्या होती है, ड्रैग क्या होता है, या बहुत सिंपल से आपको चीज़ें नहीं पता है. इफ़ यू आर 320 रेटेड, आपको मेमोरी आइटम्स अच्छे से नहीं पता है, लिमिटेशन या बहुत सिंपल बेसिक लिमिटेशंस नहीं पता है. एग्जैक्टली वो. And एक, if you're unable to answer even let's say one basic question also, they will cross check your knowledge maybe by second or third questions. If they find that कि हाँ कि continuously 2-3 basics या 4 questions का basis का answer नहीं आता है, means that person may not be that passionate enough or not serious about this profession. So then it becomes a kind of problem. बेसिकली तब भी कर क्या रहे हैं, आपका यही देख रहे हैं ना कैसा एटीट्यूड है. हाँ, आप केयरलेस हो और यू हैव केयरफुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी. एंड प्लीज़ व्हेनेवर, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम बनाते हैं. ट्राई एंड कीप इट सिंपल एज दैट. Yeah. With small practice, with few practice. Yes. And don't refer because lot of students, they really watch so many YouTube videos कि यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी देख लूँ, वो सब कर लूँ. Then they really confuse themselves only. I have a problem with that. I'll share that with you. Yes, Prem, what do you want to say? According to me, nowadays they are asking about conditional questions. Conditional question means, like, if your captain is not following the SOPs, what will you do in that condition? If another question is there, your CFI is drunk before your flight, okay, you are in flying school, what will you do in that conditions? So they're asking this type of question also. Another question they're asking, like, कि मान चले आपसे पूछ रहे हैं वो कि recent air crashes, suppose कि what was the reason behind of this crashes, plus में क्या reason था, कैसे क्या, अगर आप पायलट होते क्या करते. So they want to check your mentality. आप उस सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं कंडीशनल में, आपका जानना चाहते हैं कैसे क्या. दिस बेसिकली शोज देम योर लीडरशिप, योर टीम प्ले स्किल्स. एंड एज यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूज in GD, they basically take the group activity also on the basis of leadership, team play skills, survival active PTD, उसमें आपको team play leadership दिखाना है. तो in nowadays airline looking towards team play leadership skills and current affairs, जैसे कि मैंने आपको बताया, mental maths. Nowadays they are asking about the mental maths questions. You're not allowed to use pen or page. Do mentally questions. There are lots of questions are there, like this class 35% or 7500. Take your time, give your answer. So whenever giving the answer, like आप जब भी दे रहे हो, please memorize your answer. Don't give them answer instantly. आराम से टाइम लो, सोचो क्या पूछ रहे हैं, and explain them in a good way. Like अगर आपका आंसर स्टार्टिंग से सही रहेगा ना, स्टार्ट जब कर रहे हैं, अगर वो अच्छा आंसर आएगा ना, they will not ask you more questions because उनको पता चल जाएगा you have good knowledge of technical and HR and current affairs and aircraft investigation. They will not ask you the more question and वो decide कर लेंगे that you deserve for this job. That's it. All right, thank you. And guys, एक और one more issue which I want to discuss with all of you. Because see, English हमारा native language नहीं है, तो some of us speak Hindi, कुछ लोग regional language बोलते हैं, कोई पंजाबी, कोई तमिल. एंड सो जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दैट विल इनहेरेंटली कम इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है बहुत सारे लोगों का, कि कुछ भी हमसे पूछा जाता है, वी टेंड टू कन्वर्ट दैट फ्रॉम आवर रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, देन वी स्पीक.
तो इसमें आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कैंडिडेट को आंसर पता होता है, उसे ये पता है एग्जैक्टली उसको क्या जवाब देना है, बट उसको ये पता नहीं होता कि उस इंफॉर्मेशन को जो इधर उधर स्कैटर्ड है उसके पास, दो ही हैज़ इट, बट उसको वो कैसे डिलीवर करे 2 से 3 लाइन में। उसको स्ट्रक्चर करना है, उसको डिलीवर करना है, क्योंकि रटा तो नहीं है ना उसने सारी चीज़ें, ही सेइंग थ्रू अ नॉलेज और व्हेनेवर ही न्यू अबाउट दैट, उसने उससे सुना है, तो उसको वो लाइन 2 या 3 में वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम जो होता है हमारे यहाँ पे लोगों को, बहुत लोग स्ट्रक्चर नहीं कर पाते और बीच में फिलर्स यूज़ करते हैं, फिलर्स यूज़ करेंगे और सबके अलग अलग फिलर्स होते हैं, तो वो फिलर्स यूज़ करता है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस? I think multiple mocks or practice. And there is another reason also, like if you're going for the interview, like if you're not ready with your answers, so that time you will feel stress में भी कई बार आप सही से बोल नहीं पाते हो। So मान चलो आपका इंटरव्यू आ रहा है, so most of the people what they basically do, they basically think नहीं अभी 10 days 10 दिन बचे इंटरव्यू को, 15 दिन बचे हुए हैं, तो आराम तक रेस्ट ले लेते हैं। नो, प्लीज मेक योर टाइम टेबल ऑन डेली बेसिस कि इतना आज मुझे अगर नेविगेशन खत्म करना है, थ्योरी जो मुझे पूछा जाएगा कंप्लीट करो। प्लस when you were giving the interview, before that, as sir told you, sir, like sir mentioned, कि हमें basically we should give maximum interviews basically increase your confidence level, your leadership skills, plus आप you will not feel the stress, because जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो ना, your first question only you will feel the stress जब आप एंटर कर रहे हो रूम में। आफ्टर दैट फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप बिल्कुल नॉर्मल फील करोगे, जैसे आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, बस आंसर, और वो आंसर में वो चेक कर लेंगे आपका नॉलेज कितना डेप्थ में है, कितना एक्यूरेट आंसर है, और कैसे आप डिलीवर कर रहे हो उस आंसर्स को, रॉन्ग तो नहीं दे रहे हो, करेक्ट वे में दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें कैसे होगा? प्रैक्टिस प्लस एज आई मेंशन अर्लियर कि आप जानो कि क्या क्या पूछा जा चुका है पहले, उसको बार बार करो और नॉलेज लो, और एक स्पेसिफिक एक नोट्स बनाओ अपना खुद का नोट्स कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, लास्ट टाइम तक उसमें से पढ़ो, एंड लास्ट डे टेक योर रेस्ट लो, फिर सीधा इंटरव्यू देने जाओ, नेक्स्ट लेवल का इंटरव्यू जाएगा आपका। या सो दिस इज यस वन वे ऑफ डूइंग इट कि आप बहुत सारे मॉक दे सकते हो। जनरली आप अपने कलीग्स को दो, समटाइम आप कैमरे मिरर के सामने भी कर सकते हो। बट फिलर्स का जैसे कुछ लोग होते हैं लाइक यूज़ करेंगे, सम पीपल विल यूज़ सम अदर वर्ड, कुछ ना कुछ फिलर्स होते हैं। तो पर्सनली जो मुझे लगता है कि फिलर्स इसीलिए आते हैं कि आप सोच रहे हो, यू आर ट्रांसलेटिंग दैट सेंटेंस, तो बेटर है आप पॉज लो। आप प्रॉपर पॉज लो। इफ अगर आपको किसी ने पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, ये टेक्निकल भी हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, आप दोनों में टाइम ले सकते हो। 30 सेकेंड टाइम लो, स्ट्रक्चर दैट जो भी आपका आंसर है उसको स्ट्रक्चर करो, देन से अगर आपका लैंग्वेज रीजनल है या फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो होगा, बट स्टिल यू कैन रिड्यूस दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट। या मतलब मैंने भी बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, तो दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दे स्पीक वेरी बेसिक इंग्लिश with a touch of their regional language and a tone, and they have cleared the interviews. I think इसमें इतना कोई अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इवन बहुत अगर थोड़े बहुत फिलर्स हैं तो दैट्स ओके। आई मीन यू रियली डोंट नीड टू ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ कि नहीं भाई मैंने तो लाइक 2-3 बार 4 बार इंटरव्यू में बोल दिया, या बीच में ऐसा कुछ करके बोल दिया तो मैं मतलब फेल ही हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो interviews are normal, basic, until unless you really do something blunder, you're set, and if your behavior is good, your attitude is good, और आप एक अच्छे I think एक अच्छे तरीके से आपने दिया तो you're set. That's correct. So that is about कि हम how to deal with the sometime regional languages. Now let's talk about मेरे पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ लोग आएंगे, they'll just say कि
सब कुछ आंसर किया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने जवाब नहीं दिया। एक ये चीज़ हो गई और मैं उस पास नहीं हुआ। पहले क्या लगता है आपको ये सही हो सकता है? इसकी मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं भी इंटरव्यू फेल हुआ और मुझे भी तब ये लगा था कि मेरी गलती नहीं है। तुम एक बार हुए होगे ना? हाँ। हमने तो काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं फेल होने के। नहीं, उसमें मैं भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं रहा हूँ। बट हाँ, इंटरव्यू में मैं फेल हुआ था जब मैं पहली बार। तो मुझे भी ये लगा था कि मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। बट देन कई सालों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वाज रॉन्ग, मैं ही गलत था। वो लोग जो इंटरव्यू पैनल है, दे आर स्मार्ट पीपल, they have taken so many interviews, they are well experienced, so they can judge us very well. That's true. एंड और दूसरा ये सिंपल सी बात है, पर्सनल तो कुछ नहीं है ना। हाँ, देयर इज नथिंग पर्सनल, राइट? एब्सोल्युटली। और कभी भी कोई भी इंटरव्यू या एग्जाम फेल होने के लिए कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। इट्स टू मेक यू पास। यस सर। और अगर आपका कुछ इश्यूज हुए हैं, आप फेल हुए हो, कोई भी हुआ है, कोई पहले तो कोई भी हो सकता है, इट्स द डे। I have experiences a lot, but then you taste the success also, so that's fine. But you have the very important thing after, if somebody is not very lucky or nahi raha, he could not, is the clear evaluation. अगर आप फर्स्ट टाइम evaluate नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम क्या थी और आपको लगता है आप रिजिड हो कि नहीं मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने सब कुछ सही किया है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप गलत हो गए, है ना? सो मेरा सजेशन टू ऑल एस्पायरिंग पायलट इज कि इट जस्ट वन, इफ दिस हैपन ऑल्सो देर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, जस्ट एनालाइज योर सेल्फ, हैव अ क्लियर पिक्चर एंड देन मूव ऑन. Yes, Prem. Sir, according to me, it depends on the vacancy also. How many vacancies are there? Like, जैसे कि आपको पता है, we have right now 700, close to 700 airplanes, and few, like most of the like if you are talking about that, close to 100 airplanes are grounded. Okay, so depend करता है कितनी vacancies है. Next thing, what we basically think whenever we go for the interview, okay, तो हम सोचते हैं कि हमारा बहुत बेस्ट है, ठीक है, हमने सही दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस, नॉट अकॉर्डिंग टू द कैप्टन, तो उनके हिसाब से जो 200 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से जो बेस्ट होगी उनको लेंगे वो इंटरव्यू में सेलेक्ट करेंगे. बिकॉज आपसे अगर सपोज दे आस्क यू 25 क्वेश्चंस, उसमें से देखेंगे कितना करेक्ट था, क्या आंसर था, आपका बिहेवियर, योर स्ट्रेस लेवल, सारा चीज़ें उसके बेसिस पे जज किया जाता है, आपका डिसिप्लिन, बाकी चीज़ों पे, प्लस आपके रिटर्न एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं, सॉफ्टवेयर जो आपने अडॉप्ट दिया है, साइकोमेट्री, योर ग्रुप डिस्कशन स्कोर, दैट बेसिकली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम. इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं होता. इंटरव्यू तो एक राउंड है, उससे पहले का जो राउंड है उसको पूरा कंप्लाई, अगर आप कंप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा कैसा आपको, आपका फाइनल रिजल्ट कंपनी भेजती है सर आपको, वो देखते हैं कि इंटरव्यू सारा चीज़, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा अपनी तरफ से बेस्ट दो. प्लस में वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक. फेल होने से और आप स्ट्रांग होते हो, ठीक है. अगर आप फेल हुए, कुछ ना कुछ गलती रहेंगे आपने, कहीं पे आप वीक रहेंगे, सारा चीज, तो अकॉर्डिंग टू मी, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. एंड अदर द रीजन ऑल्सो कि लोग ना बहुत डरते हैं सब नॉर्मल पीपल में, वो सोचते हैं यार कि अब ये वैकेंसी आई है, बहुत सालों बाद अगली वैकेंसी कब आएगी पता नहीं है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डरते हैं और ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और टेंशन लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पढ़ा हुआ है उन्होंने वही भूल जाते हैं. तो लास्ट जो दिन है उसमें आपको जो पढ़ रखा है आपने, उसको बस आराम से पढ़ो एंड बी कॉन्फिडेंट. ओवर कॉन्फिडेंट भी रहना, अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं. आंसर सही से दो, जो पढ़ा आपने काफ़ी है, बस ट्राई टू गिव योर बेस्ट, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा. He made one valuable contribution, like the interview, you have to be prepared from the start. So there are multiple stages, even for either cadet के लिए भी जाओगे तो भी multiple stages हैं, और अगर आप conventional में भी interview के लिए जाते तो भी multiple stage हैं. So what he was trying कि आपका score is based on all the stages.
overall. So if you do well in previous stages, you'll anyway do well in the Yes, sir. interview as well. So yeah, this makes people should be very careful at the initial stages as well. Especially in a vacancy like where they have a limited vacancies. number. Like in government vacancies like Alliance here, whenever they come up with a vacancy, they have limited seats. Let's say 30 seats. Correct. So obviously they have to eliminate few. Companies like Privateer India, Indigo, Yeah. they don't say. They don't have any specific vacancies. And also competitions. Like lots of people holders are waiting for the job, unemployed pilots waiting for the job, like flying instructor, they are also applying for the airline jobs. तो competition level है आपका. And आजकल merit list पे भी select कर रहे हैं, written exam में आपका GD में बात कीजिए. तो lots of people आ रहे हैं apply We करने के don't लिए, call उसमें them से unemployed chance हो गया. Yes, pilot. sir. We call them struggling pilots Yes, struggling. for a while. Yes, sir. Struggling pilots. Yeah. No, even they are not struggling at all. Some of them, like, not we, but yeah, they are not unemployed, they'll be absorbed. See, the best beauty of this thing is, you could have a worse kind of your days of life. You may have seen days when you don't have anything to eat, but I can assure you, if you are persistent, you remain in this field, Yes. you will have brightest possible days Never of give your up. life. Yes. And then you will memorize that. Ki there was a day when I survived on one biscuit. You love that feeling. I'm sure every And this is for all CPL holder who are currently awaiting. I can assure all of them, if you are persistent, you will definitely get it. There is no way you won't get it. That's the beauty I've seen over the period of time in this field. Your struggle had been long, and suddenly one day comes, you are just gone, and your life has completely changed. Yes. True. I mean, I'm sure every aspiring pilot who is passionate and really interested in aviation will definitely take off one day for sure. That's something. And once you become a pilot, आप pilot बन गए, आपका life auto pilot पे चला जाएगा. Pilot is always a pilot. yes. If you once Once you become a pilot, Yes. you will always be a pilot. Yes. बाकी किसी में मन लगेगा ही नहीं ना. Yes, sir. Okay, thank you. We had a fruitful discussion. Probably it will add some value to our cadets or CPL holders, type rated, non-type rated. We'll continue to serve the people as much as possible. Thank you so much. Thank you. both of you. Thank you.